पाल की आमद, गम खार की आमद, मन टार की आमद, मरहबा। रहमतल लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूर ईमान में आज मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुनक़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। इस 1500 साला जश्न आमदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर कई उलमा अइम्मा की शिरकत रही। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए ख़ास सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरीब क़ादरी दामद बरकतुमालिया भी जलवा अफरोज़ थे। खुशगुलू कारी रफ़ीक नूरानी अशरफ़ी दामद बरकतुमालिया ने तिलावत कलम पाक से महफ़िल का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। समात करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। नूर वाले मुस्तफा की आमद है, नूर वाले मुस्तफा की आमद है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم فرش جمی ہو یا عرش الہی محمد کے ہر جگہ بول بالا محمد کا ہے इमाम फ़कीर बख्श दामद बरकत मालिया ने प्रोग्राम की निज़ामत संभाली। महफिल के पहले मुक़र्रिर इमाम फ़ादिल नबी बख्श दामद बरकत मालिया ने मौजज़ात पर जामे तकरीर फरमाई। इससे कबल आपने अपने ख़ास अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल की है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon, when Allah made all of them, He made them all just for you. ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, चुनीन व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, look at the heavens and the earth, the shining sun and the moon, when Allah made all of them, He made them all just for you. There is no one like you. There is no one who's the same, so merciful is your nature and so high is your name. لم يأتي نذيرك في نظر مثله तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना, अल-बहरु अला वल-मौजु तगा, मन बेकस तोहफा हो शुरुबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जामना, नफियत शिव वसखा कतम, ए गैसुए पाके अब्र करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर बिगड़ा जाना, बस खामाए खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा,
इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार से राग पड़ा जाना there is no one like you there is no one who's the same the merciful is your nature and so high is your name tu शम्म रिसालत है तू शम्म रिसालत है आलम तेरा परवाना तू माग नबूवत है ए जलवाए जाना खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना पीने को तो पी लूँगा पर अर्ज जरा सी है अजमेर का साक़ी हो बगदाद का मैं खाना ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये गए इन्ना अअतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये है सच्ची बात सिखाते ये है सीधी राह चलाते ये है नज़्र रूह में आसानी दे कलमा याद दिलाते ये गए उनके हाथ में घर कुल जी है मालिक कुल के गिलाते ये है जगह पानी अता कर दे भरी जन्नत लिवा कर दे नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे there is no one like you there is no one who's the same so merciful is your nature and so high is your name तेरे सदक़े में आका सारे जगह को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा सिमत नबी बो जहल गया आका से उसने ये कहा गर हो नबी बतलाओ ज़रा मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह बोलो माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह बोलो माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु हक़ ला
अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह there is no one like you there is no one who's the same so merciful is your nature and so high is your name tu shamme risalat hai आलम तेरा परवाना तू मांगे नबूवत है ए जलवाए जाना ना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربي زدنا علما نافعا Très respectueux et muhtaram Hafidh Qari Rafiq Hafidhahullah respectueux de notre rang ben grand qu'il a, ben jeune, ben zafa, ben si en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. D'abord, nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah vient avant tout. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux, c'est le bon Dieu unique qui mérite toute adoration et il n'a aucun associé avec lui. C'est lui-même Allah as-Samad, toute créature dépend de lui, il n'est pas dépend de l'opération. C'est lui-même Allah, lam yalid wa lam yulad, ni les fins prend naissance, ni les fins donne naissance qui ken. C'est lui-même Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, n'a pas aucun parmi ces bonnes créations qui ressemble à lui. Et en même temps, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala infiniment. Il peut donner l'occasion pour nous réunir dans Mahfil et Milad, durant les mois Rabi'ul Awwal pour exprimer nos reconnaissances vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala li finawa'i Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme rahmatul lil alamin et plus grand faveur Allah inaccorde nous trouve de ummat sa nabi l'am nous fait dua avec ben bon niyat qui fait organiser Allah fait qaboul nos présences tout nabi rasoul qui vient ils ont fait beaucoup de miracles beaucoup mu'jiza. Et Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah n'a voulu comme khatamun nabiyyin. Après lui, il n'y a aucun nouveau nabi qui peut venir à cause, ce qui veut dire son nubuwat et que risalat li restait jusqu'à Qiyamah. Étant donné son nubuwat et que risalat restait jusqu'à Qiyamah, ce qui veut dire ça ben miracle qu'Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam 400 bananes de cela l'infait qui se soit dans Makkah Mukarrama ou bien dans Madinah al-Munawwara, il pourrait s'en défaire jusqu'à Qiyamah, personne ne peut pas faire aucun miracle pareil au dunya ici.
Un Nabi, un Rasoul, quand il vient, c'est un argument qu'il y a ça. Pour prouver l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer ce ummat, Qudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça Nabi là, quand il fait ce miracle là, il n'est pas tape sur l'estomac, il dit moi, je fais ça, non. Il dit si je fais ça, c'est parce qu'il m'a fait les autres comprendre. Et un Rab Allah subhanahu wa ta'ala, par son Qudrat qui m'a capable de faire ça. Et si je peux penser ce qui m'a fait là, jamais je peux faire une petite chose pareille, de reconnaître Allah se grandit, amène iman le Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, plus grand miracle. Ce plus grand mu'jiza. Vous connaissez fan la ligne en dépend, ça fait facile ça. Pas un petit miracle ça. Autant de millions de kilomètres qui ça la ligne là était avec Dunia. Un démon debout l'eau en colline Abu Qubais. À soi ça la ligne là peut éclairer de l'échelle. Quraish challenge Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment tu es un prophète d'Allah, montre-nous un signe. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il débute l'eau Abu Qubais, il lève sur la tête vers sa l'échelle là, ben là, périer, puis qui est bégué dans l'échelle ça? Qui est bouca à faire ça? Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nek lève sur les doigts shahada, il fait un signe avec saladin là, Allah fan saladin là en dit. Pas un petit miracle ça. Shakul Qamar, un grand miracle. Mais seulement il pas plus grand miracle que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait. Al-Isra wal-Mi'raj. Ça n'a pas rentré dans l'esprit du monde même ça. Dans laps un petit temps d'un parti la nuit, Allah fait son mahboub sallallahu alayhi wa sallam voyager, sorti depuis Makkah, arrive jusqu'à Baytul Maqdis, Masjid al-Aqsa. Sorti là-bas, elle vient ben l'échelle, dépasse 7e l'échelle, arrive Sidratul Muntaha, dépasse ça jusqu'à côté Allah fin où il y aller. Il montre dit parmi ce ben si là-dedans, il y a une namaz 50 aller diminuer 25 fois namaz. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam retourné, s'accrocher de la porte là, à copie à pendant. Un petit miracle ça? Un grand miracle ça. Malgré ça, il n'est pas plus grand miracle pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui est plus grand miracle alors pourtant? Ou elle est de Hudaybiyah. 1500 sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas payer permission pour faire Umrah de Makkah. Hazrat Jabir radiyallahu anhu dit, nous délo infini. Délo infini. Résiste un petit délo, il dit comme ça, tout le monde qui nous tient ensemble là-bas, nous regardons et fixons juste l'eau ça délo. La masse d'une qui qualité soif de tibéga. Bala dit, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, peine délo. Ni pour boire, ni pour faire wudu, ni pour nous servir, ni pour donner ben animaux. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui canne un petit délo écrit là? Balana men sadilula indon Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait wudu avec sadilula. Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam les plonge sur la main dans sa récipient là. Quand il tire sur la main, on trouve de l'eau et souci entre les doigts. Pourquoi un petit miracle ça? Un démon pose question à Hazrat Jabir radiyallahu anhu. Sa zoula quand il arrive sa mu'jiza là, comme dit mon petit bois ça de l'eau là, un petit guide de l'eau qui tient ça. Barakat l'ami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Jabir radiyallahu anhu m'a fait serment le Allah. Sa mu'jiza qui mon habit qui fait de Hudaybiyah là, si tu es pour 100 000 démons si sa zoula, tout petit bois ça de l'eau là. Il dit seulement on utilise 1500 sahaba. 1500 sahaba d'un petit guide de l'eau, barakat l'ami Mubarak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il n'y a pas plus grand miracle pour lui. Ben sahaba dit parfois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il prend sa luqma manger là avec avant de mettre sur la bouche mubarak ben sahaba dit nous donne sa bouche manger là fait tasbih pour Allah. Pas de comique ça hein. Mon pédou hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ben sahaba ils vivent ça même moment là. Et une fois la pluie pas peut tomber dans Madinah al-Munawwara sahaba dans Masjid Nabawi zou Jum'a. Anas bin Malik radiyallahu anhu quand il lève la tête dans l'échelle là blé. Quand il a l'échelle blé, la pluie vous tombe. Bizan a niaz. Un démon lève les ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ben animaux peut souffrir, plantes pas peut pousser. Nous-mêmes nous peinons suffisamment de l'eau. La sécheresse de Medina. Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Fais dua Allah fait la pluie tomber. Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Un l'échelle qui est blé. Allah sur Rasul nek lève sur la main comment il fait dua. Un niaz pas qu'on écoute les vini. Allah fait la pluie comment se tomber par barakat dua Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Tout ça là, ben sahaba, ils vivent malgré Moré Diaou, c'est pas plus grand miracle pour Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et tu comprends le langage ben animaux. Les animaux trop loin. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vin res Madine al-Munawwara. Il a pi sur la main, loin trop un piétam, il fait ce khutbah. Un démon vient dire, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, nous avons un mimbar pour Allah sur Rasoul, il y a des autres. Vraiment, nous avons un mimbar pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, début l'eau pour les gars au terre, sur la voie qui est plus loin, mais démon depuis loin trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus bien. Les début l'eau sur mimbar là, il a arrêté pour sur la main, le satron là. Ben, sahaba dans le PACG, nous avons un satron là, peut pleurer comme un petit baba. La voix petit baba depuis d'un pied, on attend un pied pleurer où? Sahaba peut dire nous entendons un enfant pleurer la voix petit baba. Ben là dit Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam descend depuis le samimbar là, les vini les mailles sa pied là pareil comme une maman si à ses enfants dans ses bras. Nabi Karim il caresse lui, là nous n'arrêtons de pleurer. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit dans mon muhabbat qui sa pied tam là tu peux pleurer là. Et tu comptes comme tu peux appuyer mon la mélodie. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam donne-lui un choix. Et d'aller s'itoler. Cause que ça pille là, d'aller s'itoler. Moi continue à piller mon la mélodie, autant me faire khutbah. Mais si tu fais sabar ici, Allah subhanahu wa ta'ala me donne toi garantie, me coupe toi ici le dunya, Allah fait plante toi de jannat là-bas et te donne ben fri ben habite jannat mon sa ben fri là-bas. Ça pille là, ya Rasulullah, me préfère rester de jannat là-bas. Narai takbir. Narai risada. Ou imaginez qui niveau iman sa ben sahaba là, c'est qui témoigne ça des autres sa ben mu'jiza là. Malgré ça, c'est pas plus grand miracle pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce plus grand miracle. C'était lecture qui Karisab qui peut faire là, c'est sa copie Coran qui nous est dans la case là. Dommage. Ça l'impact qui bizarre est là. Quand nous écoutons le Coran, quand nous tentons le Coran, quand nous lisons le Coran, Ahl Sunnah wal Jama'a, nous beaucoup loin. Nous faisons Allah préserve Karisab. Allah donne barakat dans son ilm, Allah préserve sur la voie. Et ce Coran qui enseigne beaucoup, Mauricien ici, et même fini bin Qari al Coran, Hafid al Coran, nous fait dua, Allah fait ce Coran là bin sous camarade de kabar inshallah. Qui l'impact Coran tina lo ben sahaba. Aucun l'exemple comme Usayd bin Hudayr radiyallahu an. Un jour à soir, les met sur cheval attaché à une place, les tina ce petit garçon s'appelle Abu Yahya. Les mettre à côté de ce cheval là, il a ta cheval là. Il dit, moi tu peux faire qiyamul layl, moi peux faire namaz de la nuit, dans mon lecture Coran qui me peut faire dans namaz là, il dit, quand moi peux lire, ce cheval là peut agiter. Il peut lire Coran, cheval peut agiter. Il dit, quand moi arrête de lire, cheval là reste tranquille. Moi continue lire Coran, cheval là réagite encore. Il dit, plusieurs fois il arrive ça, finalement mon père tension, il y a le don du tout, il y a le blesse moti baba, mes enfants qui étaient à côté, Abu Yahya. Il dit, mon arrête namaz là, mon arrête lire. Il dit, ce qui est plus extraordinaire là-dedans, il dit, au moment quand je lève la tête vers l'échelle, je trouve la lumière, un nour dans l'échelle puis apparaît. L'éclairage dans l'échelle. Il dit, mon père, là, demain, grand matin, il vient de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Coran sur l'impact. Allah dit aqimi s-salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Coran sur l'impact. Prends ça message à la case. Aux enfants c'est pas content d'un Coran, fallait écouter Coran la case. S'il fallait mettre un pendrive dans l'auto là, mettre Coran lire. Nous, ben, les enfants, avec santé, grand-matin, tantôt. L'éclamisement, grand-matin, tantôt. Coran, n'est pas tandem du tout. Quand, dernière fois, dans le portable, qui a un package, on a assisé tout seul la case, vous dites, moi, mettez une sourate, vous allez m'écouter. Quand? Dans nous, la vie, quand Coran, sur l'impact. Ça, sahabila, là, demain, il est venu, il dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ben, arrive-moi ça à soir. Moi, peux lire Coran dans mon namaz, moi, c'est pas le piazité. Le Nabi Karim, il dit, là. Il dit, moi, je attention, il blesse mes enfants, moi, arrête de lire. Il dit, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est plus extraordinaire là-dedans, on trouve la lumière, un nour apparaît dans l'échelle, jamais on trouve ça, et il peut venir vers moi.
Il dit, bon, père, mon arrête lire, mon termine namaz là, Nabi Karim 3 fois, il dit, oh Hussein, toi tu besoin continuer à lire. Qui fait ton arrêter? Il dit, ya Rasulallah, mon père, Nabi Karim, toi tu besoin lire. Il dit, ya Rasulallah, mon père, Nabi Karim, qui fait ton arrêter? Il dit, ya Rasulallah, mon père, comment on trouve ça? Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, toi tilawat Quran, qui te tu peux faire dans namaz là, ben farishta dans l'échelle, il descend pour ton tilawat dans namaz. Farishta, il descend, mon frère. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit oh c'est tu bisa continuer lire c'était ban farishta depuis dans l'échelle qui descend pour ton lecture Coran et si tu continues lire jusqu'à grammater sa ban farishta là tu pourrais là et tout ban habitant Medina tu pourrais trouver sa ban farishta là la autres Allah tâche-nous avec Coran Allah fait nous ben enfants content lire Coran Allah donne-nous barakat dans nos vie à travers Coran wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बनाया है कि न उससे पहले ऐसा कोई बनाया है न बाद में कोई बनाएगा। सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल, सबसे अनवर तमाम कलमात मिलकर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने से कासिर हैं, क्योंकि रब कदीर ने पहले ही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया है। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद अरीब क़ादरी दामद बरकतुहु मालिया ने अपने मुनफरिद और ख़ास लबो लहजे में बरगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह हाजिरी दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि अला इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है और भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से अल्लाहुम्मा सल्ली मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे जन्नत में फातिमा की जहाँ रहे हाँ जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे या रब मेरी दुआ है या रब मेरी दुआ मेरी माँ वहाँ रहे या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे हाँ जन्नत में मुस्तफ़ा के सहाबा जहाँ रहे या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे
या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। कलाम आला हजरत पढ़ना है। सबसे औला आला हमारा नबी, बोलो सबसे औला भी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, बोलो अपने मौला का प्यारा भी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा भी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अब ये है अकीदा, जिसने खाया है सरकार का वो मिलकर पढ़ेगा। कौन देता है देने को मुँह, बोलो कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद, अल्लाह के शेर हैदरे अली 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 मौला, अल्लाह के शेर हैदरे करार पर दुरूद। हजरत हसन हुसैन के किरदार पर दुरूद। अल्लाहुम्मा मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बोले सुभान अल्लाह। आप सारी थकन दूर कर देते हैं, आप बड़ा ही प्यारा सुनते हैं। बोले सुभान अल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह आपको मदीना दिखा दे। आप हर साल मदीने में जाके दुरूद पाक पढ़ो, मेरी दुआ है। आप बहुत ही मिलकर पढ़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है। सारे कहते एक दफ़ा सुभान अल्लाह। आइए एक और कलाम पेश करता हूँ, मेरे साथ मिलकर इस कलाम में शामिल हो जाइए। आला हज़रत अलैहि रहमा का लिखा हुआ कलाम है और मिलकर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मदिन। सबसे औला हो आला हमारा नबी, बोलो सबसे औला हो आला
भी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह बोलो सुबहान अल्लाह। अभी आपने नबी करीम को देखा नहीं है, आपने नबी करीम को देखा नहीं है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने देखा नहीं है। अब शायर कह रहे हैं अभी तो आपने हुजूर को देखा नहीं है फिर भी झंडे उठा लिए हैं, हुजूर को देखा नहीं है फिर भी मिलाद मना रहे हो, हुजूर को देखा नहीं है हुजूर पर जान देने के लिए तैयार हो। अब शायर बयान करते हैं, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, सोचो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक सिमते उमर एक सिमते अली, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। मेरे आका ने चांद के 2 टुकड़े किए और मेरे गौसे आजम की करामत तो क्या ही बात है, बोलो ना सुबहान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की करामत की तो क्या ही बात है कि एक साथ 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, बोलो सुबहान अल्लाह। अब शेर सुनो, चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सोचो सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। झूमो झूमो 1500 साला जश्न आया, 1500 साला जश्न, 1500 साला जश्न आया, 1500 साला जश्न, 1500 साला जश्न आया, 1500 साला जश्न। नूर आ गया, 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 बोलो नूर आ गया। हाँ रब का नूर आ गया, नूर आ गया। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा
नूर का। बोलो सरकार की आमद। झंडे दिए ना, झंडे माशाल्लाह, ये सरकार के नाम के झंडे, हाथ उठाकर झंडे लहरा कर बोलना है सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। जरा ऊंचा बोलो मरहबा, नूर आ गया। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। बोलो नूर आ गया। हाँ रब का नूर आ गया, नूर आ गया। आ रहा है, जिब्रील अमीन की बात है। आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का। पड़ गया है ताईरे सिदरा को चस्का नूर का। बोलो नूर आ गया। हाँ रब का नूर आ गया, नूर आ गया। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बोलो नूर आ गया। हाँ रब का नूर आ गया, नूर आ गया। हाँ रब का नूर आ गया, नूर आ गया। नूर आ गया है तो नारे लगाते हैं सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। गज वज के बोलो, जरा ऊंचा बोलो मरहबा। नूर आ गया, नूर आ गया। हाँ रब का नूर आ गया, नूर आ गया। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, एक दफा सारे बोल दो मोहम्मद हमारे। या अल्लाह जो बोले इसी साल उसे मदीना दिखा दे। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। शायर बयान करते हैं मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं, किन्नू कवा तेरे जया कोई नहीं। अक्सा दे विच आका मेरे पढ़ के नमाज पिछे तेरे, नबियां ने भी ए हो गया आका तेरे जया कोई नहीं, आका तेरे जया कोई नहीं। जो आका को माने, जो आका को माने वो रहमान वाले, जो उनको ना माने वो शैतान वाले।
लगाते हैं नारा ईमान वाले, ईमान वाला बोलेगा मोहम्मद हमारे वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मेरी हाजिरी मुकम्मल हो गई। अब जितने लोग हैं एक दफ़ा नारों का बड़ा भरपूर अंदाज से जवाब दीजिए कि दिल को मज़ा आ जाए, क्योंकि मुस्तफ़ा की समात पर लाखों सलाम मेरे आका भी सुन रहे हैं। ठीक है ना? जितने हैं एक दफ़ा मिलकर बुलंद आवाज से सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, गज वज के बोलो मदनी की आमद, मदनी की आमद, मरहबा मोहम्मद हमारे बड़ी शान। नाज़रीन, इस वक्त आप मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुनाक़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाना और अपनी खुशियों का इजहार बिल्कुल हक़ है। कारी मंसूर दामद बरकत मारिया ने मुख्तलिफ अहादीस मुबारका की रोशनी में जवाज़ पेश किए। Maintenant, quand nous gagnons l'occasion pour participer dans mes filles et milades, de nos présences dans mes filles et milades, il est aussi important que quand nous sortis depuis dans mes filles là, nous faire un bilan. Nous faire un bilan, nous faire un certain assessment. Que quand nous sortis la case, nous allons dans mes fils là, et quand nous retournons, dans quel état nous retournons. Est-ce que, quand nous chamil dans mes fils là, après quand nous retournons, nous tenons de nos goûts in diminuer, ou bien tenant là, in augmenter encore. Est-ce que, niveau de nos connaissances islam, l'inaugmenté ou bien l'inreste comme il était. Est-ce que sa relation du cœur qui nous est né avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que sa relation là il renforce aussi ou bien l'inreste comme il était avant, ou bien l'invine plus fragile. Est-ce que ça choque pour nous vivre dans l'obéissance à Allah et sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'inaugmenter ou bien l'indiminuer? Nous besoin assess tout ça là et là nous pouvons comprendre est-ce que nous bénéficions avec Milad ou bien nous pas bénéficier. Milad dans les mêmes liens sur Baraka, sur Rahma, saisissent nos conditions quantités pour qu'ils nous soient capables de bénéficier avec ça. Il arrive un grand moment pour nous faire ce travail assessment qui m'a dit ou là. Autrement, les temps peut aller, nous peut perdre nous les temps, mais seulement quand nous y étions, nous encore en place, ou bien nous peut reculer, nous peut dégringoler. Il arrive le moment pour prendre ça sérieusement. Et comment Hafiz Sab, dans son introduction, une cause concernant Nour, et nous n'entrons en lit à maintenant, il jouait beaucoup le mot Nour là. Un terme qui servit pour Allah, un terme qui servit pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un terme qui servit pour le Coran, et un terme jusqu'à même nous servir pour les enfants de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Hadat Ousmane, il ne connaît pas Dhun Nourain. Qui fait appeler Dhun Nourain? Parce que Nabi Karim se tifie dans son nikah. Quand Tifi là, il gagne son wafat, et l'autre Tifi, Nabi Karim, il fait son nikah avec Hadat Ousmane radiyallahu an.
Hadrat Osman, il connaît Dhun Nourain, celui qui dénoure, c'est-à-dire des tifis de Nabi Karim, une vigne de Sonika, un après l'autre. Alors, ce mot nour-là, l'important. L'important, rappelle-lui bien. Rappelle-lui bien, l'important. L'important parce qu'il, vous connaissez, il y a une surah dans le Coran qui porte le nom An-Nur. Surah An-Nur. 24e surah dans le Coran. Et une surah qui descend quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ci Madina Munawwara. Et il y a beaucoup de la loi, il y a beaucoup de conseils que les musulmans ont gagné. Et peut-être des conseils qui nous trouvons simples, mais l'islam, il met beaucoup l'emphase là. Un exemple, je vous. Nous avons le la loi charia, il montre nous comment nous devons comporter nous quand nous avons le Jumun. Alors, ayat là peut adresser spécialement à ban Jumun qui a iman. Ya ayyuhalladhina amanu, oh ban celui qui a un iman. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. N'a pas rentre dans la case qui n'a pas pour autres. Ou pas qu'il doit rentrer dans la case d'un Jumun n'importe quand. Et même pas, ça la case mon frère, ça mon gars doit rentrer comme moi, non? Paye ça dans la loi sharia. Ou frère sur la case ça. Ou pas qu'il doit rentrer sur la case sans choper à mission. Parce qu'il ou frère, il y a sur madame dans la case. Madame là, on n'a pas mahram pour lui. Ou pas qu'il doit rentrer sur la case quand on vit. Non, hein? Et puis devant Allah dire, si arrivé on a le côté de Jumun, fa in qila lakum urji'u farji'u. On a le côté de Jumun, ça là, Jumun là occupé, il bloqué, il pas qu'à recevoir vous. Il dit bah excuse-moi, on va pas recevoir vous à ce là. Il dit où retourner. Allah dit quand il dit où retourner, ou retourner. Ou pas insister qu'il dit on a besoin de recevoir vous. Jusqu'à ça, surah là il enseigne. Adab. Alors, sa surah là, surah An-Nur, quand surah là peut terminer sur la fin, 3 derniers ayats. 3 derniers ayats ou tchekli. Ou faire ou devoir ou tchekli. Doji ou une facilité, ou n'est que mettre le au potable, surah 24, et au bout de surah là ou tchek sur 3 derniers ayats. C'est un coup qui Allah Rabbul Alamin peut dire. Allah dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Saman Djomon qui peut désobéir ou bien peut aller à l'encontre de l'enseignement de sa Nabi là. D'autres bizarres prendre d'autres précautions, d'autres bizarres prendre note. Qui précaution, qui mise en ordre. Allah dit an tusibahum fitna. Un fitna capable de gagner autres. Ou yusibahum adabun alim, ou bien une punition douloureuse capable de gagner autres. Peut faire nous comprendre l'enseignement de Nabi Karim devant nous là, tu restes opposé, tu désobéis, tu fais à la tête dire, mais tu peux bien subir les conséquences là. Il ne faudrait pas qu'il nous désobéisse à l'eau de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah sur Rasul il donne un conseil, prends conseil là aussi longtemps qu'il est capable de mettre en pratique. Définitivement, chacun est à son niveau, et il y a quelque chose qui est obligatoire, nous ne pouvons pas échapper. Et il y a quelque chose qui est wajib, nous ne pouvons pas échapper. Et il y a quelque chose que Nabi Karim est recommandé, nous faisons des efforts pour accomplir lui. Parce que ce que Nabi Karim donne nous pour faire dans la dunya, nous pour bénéficier de l'akhirat. Alors ça ayat là important. Et comme ça même, quand Hafiza bin cite le mot Nour, et dans une autre place, ce mot-là, il servit, mais seulement cette place-là, il servit le mot Nour pour Coran. Allah Rabbul Alamin dit, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ من كن أمن إيمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه إذا فين أنو نبي كريم صلى الله عليه وسلم ونصروه إذا فين سودني علي إذا فين إدري. Après ça, Allah dit
wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ah, et d'autres fin suivre sa nour qui descend ensemble avec l'ila. Ulaika humul muflihun, c'est sa manlaim qui réussit, c'est sa manlaim qui prospère. Ce qui veut dire, si nous avons envie de prospérer dans la dunya et d'akhirat, amen iman le Rasulullah comme bizarre amen iman, et honor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme bizarre honor lui, et soutenir Nabi Karim par tout moyen qui est là. Et après ça, ou faire des efforts, ou suivre sa nour, c'est-à-dire l'enseignement de sa Coran qui Nabi Karim il met devant nous là. Et quand nous disons dans l'enseignement Coran, nous gagnons une surah qui nous rassemble Nabi Karim sur un principe qui était établi à Madina Munawwara quand il fait hijrat pendant 10 années. Une surah qui nous rassemble tout. Surah numéro 17. Surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Get Antigin, ayat numéro 17-18. Get Allah Rabbul Alamin qui lui peut dire là-dedans. Les causes, insan, nous ban amal qui nous fait dans la dunya. Et na en, certains amal nous peut faire dans la dunya. Allah dit, mais seulement du monde là, l'invise pour gagner dunya avec ça. Oui, l'invise pour gagner dunya. Allah dit, l'invise dunya, ce qui nous a envie de donner pour ça dans la dunya, nous donne lui. Mais seulement dans l'akhirat, ce conséquence, c'est Jahannam. Et là, Allah dit après, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ, celui qui vise akhirat, avec tout ce travail, ce namaz, l'inféri pour lui gagner dans l'akhirat, ce rosa, l'inféri pour lui gagner dans l'akhirat, ce zakat, ce hajj, l'inféri pour gagner dans l'akhirat, ce urs, l'inféri pour gagner dans l'akhirat, so yaumun nabi l'inféri pour gagner dans l'akhirat, so nar, so qirat, so ban travail digne, so leçon, tout ce qui l'infère, l'invise pour gagner l'akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Et quand l'invise pour gagner l'akhirat, les pas ici, les croix là, mais vous gagnez l'akhirat. Non, Allah dit وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. Et il fait des efforts pour ça comme bizarre. Il fait des efforts pour ça. Il fait sacrifice pour ça. Il vise l'akhirat, il pas vise dunya, il pas vise Facebook. Malheur ça, Facebook. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand société là, qui était quand Nabi Karim, il fait vini, ou mettez l'eau potable en place là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il conseille sa ummat là. Qui te besoin faire, qui te devoir toi. Pas penser la côte sunnah jamaat, mais jannat là, puis attendre toi là. Non, hein? Non. En tant qu'il y a une sunnah jamaat, tu as un effort pour faire le salat là. Jannat là, pas gain facile ça. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Alors, mettez l'eau potable. Ibn Majah. IBN, l'espace Majah, MAJAS. Et un numéro, comment on dit, Barizi Namba. 777. 777. Nek metli. Get un coup hadith qui vient de l'écran. Nabi Karim dit, si on a envie de joindre Allah, si on a envie de rencontrer Allah dans un état qui est musulman, hein? Si on a envie de joindre Allah dans l'état qui donne un musulman, Nabi Karim dit, God a l'habitude d'accomplir 5 fois namaz. Dans le même hadith là, Nabi Karim dit, celui qui ne fait wuzu, il fait wuzu bien. Il marche al masjid pour accomplir son namaz. Chaque pas qu'il y fait, Allah brille ce guna et Allah élève un darja pour lui. Chaque pas qui marche au masjid. Alors peut-être une madame peut dire, moi, je ne parle masjid, moi. Mais non, il y a appliqué. Sa madame là, même dans son lacal, il fait wuzu. L'état il finit, il fait wuzu bien.
quand c'était pas qu'il y marchait pour y rentrer dans la salle, quand il pour faire son namaz, chaque pas qu'il y chez là, il gagne sawab là lui aussi. Oui. Alors Allah Rabbul Alamin, il donne musulman l'ordre. Quand tu fais un travail, tu vises pour te gagner akhirat. Lui faire l'effort pour ça, wa sa'alaha sa'yaha. Mais seulement avec une condition, wa huwa mu'min. Avec une condition qui dit là, il a iman, comment bizarre. Si il fait aller, Allah dit fa'ulaika kana sa'yuhum mashkoura. Ces sabans-là, des efforts, il y a des efforts payants. C'est-à-dire, vous pouvez bénéficier de ce sabab. Alors, mon Dieu, où est l'ayat Coran? La surah An-Nur. Mon Dieu, deuxième ayat Coran. La surah Bani Israël. Mon Dieu, où est un hadith? Ibn Majah 777. Note l'autre hadith là aussi. Bukhari 47 70. 47 70. Disons-nous là-dedans. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah il donne l'ordre, wa andir ashiratak al-aqrabin, Nabi Karim il monte le Safa, sa colline là. Il monte le Safa, il appelle Quraysh. Oh tel tribu, Banu Fahr, ou bien Banu Fihr. Il y a dit vini. C'est qui vini, c'est qui pas capable de venir. Hadis là, nous, quand on pas capable de venir écouter ce que Nabi Karim peut dire, l'indélégant qui can, il a dit, allez écouter un coup qui peut dire. Le temps là, il réunit, Nabi Karim dit à Banna. Il dit à Banna, si moi dis d'autres, il y a l'armée derrière là. Il y a l'armée qui vient le cheval pour envahir. Est-ce qui de pour croire moi? Hal antum musaddiqi, est-ce qui de pour croire moi? Get Quraysh sur réponse. Bien important sa phrase là. Quraysh dit à Banna, ma jarrabna alayka illa sidqa. Quraysh dit comme ça, hey Mohammed, oui, nous pouvons écouter toi, parce que ce qui nous connaît avec toi, tout le temps te cause vrai. Nabi Karim, sur base, quand il démarre la vérité. Jamais Nabi Karim, le nom d'Inde, l'Indien qui se fausse à Banjoumoun. Non. Alors, Nabi Karim dit, est-ce qu'il vous croit moi? Banla dit oui, parce qu'il nous connaît toi, un Joumoun qui cause vrai. Et dans ce hadith là, sur l'autre version de Sunan Abi Daoud, là-bas, il met clair que ce qui nous connaît avec toi, jamais te cause menti. Ça n'a pas tout le temps te cause vrai, Abu Daoud, il jamais te cause menti. Ça veut dire din pas capable de propager une base mensonge. Quand nous pas connaissons masla, nous pas connaissons. Quand nous pas connaissons un point de akida, nous pas connaissons, nous pas cause li. Sa surah qui mon Dieu ou la surah Bani Israël là, et une place ça aussi l'indié à nous. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Une petite chose qui te paye la connaissance là, pas besoin de toi derrière ça. Moi pas connais ça point akida là. Qui fait mon bidal explique ça moi? Moi pas comprendre ça. Moi pas connais ça masla là. Qui fait mon bidal insister pour aller expliquer ça masla là. Alors, Allah dit inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah vous pose question avec nous, hein. Avec sa léquelle là, Allah vous pose question. Avec sa oreille là, Allah vous pose question. Avec nous lisier, Allah vous pose nous question. Qu'est-ce qu'on fait avec sa ni'mat là? Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mon Dieu, le hadith de Bukhari 47-70, tout nos travail dit bien basé sur la vérité. Même dans nous la case vis-à-vis nous, madame, nous enfants, cause vraie. Si tu aimes, tu peux cause mentir devant tes enfants, ou bien tu cause mentir, tu peux pas remarquer toi, mes enfants là, ils finissent de connaître ce que mon papa, mon maman, ils disent là, menti ça. Mais en d'autres mots, ils finissent de faire une leçon aux enfants, que tu as besoin de mentir comme ça. Et tôt ou tard, ils vont retourner ou la monnaie chance. Tôt ou tard, les enfants là pour retourner ou la monnaie chance. Il y a beaucoup d'une qualité mentie qui est pour choquer. Au bout choquer. Alors, parmi les leçons qui nous utilisent à retenir, tout nos travail est basé sur la vérité. Ensuite, qui nous besoin faire en tant qu'un musulman? Prends ça comme une leçon
ou à l'étudier, pas pour gagner du temps, explique tout ça là avec beaucoup de détails, mais juste me donne une référence là. Muslim. M-U-S-L-I-M. Muslim. M-U-S-L-I-M. 26-99. Nabi Karim, il donne un conseil. Comment ton envie bénéficier d'akhirat? Nabi Karim dit, résoudre le problème du monde de la dunya, Allah pour résoudre ton problème d'akhirat. Nabi Karim dit, donne une facilité à un monde de la dunya, Allah pour donner toi facilité dans la dunya et dans l'akhirat. Cacher défaut à un musulman dans la dunya, Allah pour cacher pour toi dans la dunya et dans l'akhirat. Les pandias nous mettent tout le Facebook dénoncer un derrière l'autre. Ou imaginez sa société la quotidienne là. Tous nos discussions dans Facebook. Alors Nabi Karim dans hadith là dit, c'est lui qui ne cache de défaut ce frère musulman de la dunya, Allah cache ce défaut de la dunya et de l'akhirat. C'est lui qui reste à disposition ce frère musulman pour aider à tout moment. Allah pour aider à tout moment difficile. Nabi Karim dit, c'est lui qui ne prend un chemin pour aller chercher l'éducation digne. Sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Allah facilite un chemin pour lui vers Jannat. Nabi Karim dit qu'il y a un groupe musulman in zone de masjid pour faire tilawat Coran. Et pour étudier le Coran, pas juste tilawat là. Pas juste tilawat. Yatloun, fait tilawat, yatadarasoun, et ils empruntent le Coran en eux. Nabi Karim dit, illa nazalat alayhim sakina. Allah fait cette sakina, cette tranquillité, ce qu'il appelle peace of mind, ou bien peace of heart descend d'où. Et Allah sur rahma couvert où. Farista encerclé mehfil là. Qui mehfil capable meilleur, qui est un mehfil que farista encerclé mehfil là. Allah sur rahma spécial in couvert mehfil là. Un mehfil que Allah sur sakira peut descendre, qui meilleur mehfil qui ça. Alors dans tous nos masjid, Tibiza est une session tilawat Coran et session étude du Coran. Et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Quand le monde peut faire ce travail-là, de étudier le Coran, de apprendre le Coran, alors Allah fait des éloges auprès de man farishta. Et finalement, il y a une phrase importante. Nabi Karim dit, man batta'a bihi amalu. Celui qui son amal même inféri en retard, alors son appartenance familiale pas pour faire al plus devant. Lam yusri' bihi nasabu. Ni envie dire que moi amal qui motive à faire, moi pas faire, mais pas la cause, moi papa un grand alim, mais moi pour échapper. Non. Si amal qui motive à faire, moi pas faire, pas veut dire mon dada tient grand wali Allah, mais moi pour échapper là moi. Non. C'est lui qui dans Maïdani, amal même l'inéré sans retard, a de sur l'appartenance familiale, pas pour faire y aller plus devant. Dunia, darul amal ça. Nous efforts qui nous beau faire là, ça efforts là, comptez ça. Et Coran indien nous, wa sa'alaha sa'yaha. Faire des efforts pour ça. Et finalement, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam get so mise en garde. Morejaou, Bukhari. Beikash A'i. Hadith numéro 1344. Hadith numéro 1344. Check-li. Vous connaissez qui était ça? Nabi Karim. Quand nous peut dire Milad, Rabiul Awwal, c'est en même temps Nabi Karim so wafat. 1344. Nabi Karim so dernier l'air. Quelques jours après, avant il gagne son wafat là. Nabi Karim il fait ziyarat Uhud. Nabi Karim il fait namaz janaza pour ban shuhada Uhud. Comme a dit il peut faire namaz janaza pour ban jumun qui fait gagne wafat. Une service à moula. Salatahu ala al-mayyit. Comme si il fait gagne wafat Nabi Karim. Pourtant, shuhada Uhud sont shahid 8 bananes avant. Après 8 bananes, Nabi Karim peut faire namaz janaza pour ban là. Pas veut dire pas tifer, mais il réfère. Plusieurs fois. Jusqu'à une riwaya dit, Nabi Karim il fait namaz janada Uhud 70 fois. Alors, Nabi Karim finit fait namaz, il retourne dans masjid, il vient le mimbar.
Nabi Karim, il fait appel à Sahaba et Kiram. Et l'autre hadith dit, un masjid, il débordé avec du monde. Là, Nabi Karim, comment dire, il peut faire ce dernier grand waz. Nabi Karim dit, inni faratul lakum. Il n'arrive là pour me séparer avec eux. Il n'arrive là pour me quitter dunya en cette. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, depuis là, je peux trouver mon house d'akhirat. La fontaine spéciale qu'Allah pour donne-moi, je peux trouver ça d'akhirat. Nabi Karim dit, Allah il donne-moi trésor de salati Allah. Allah il donne-moi la clé d'un trésor de salati Allah. Ensuite, Nabi Karim dit, wa ana shahidun alaykum. Je pourrais être un témoin. Et là, guette bien. Et là, le mot shahid nous servit shahid avec une préposition li. Et nous servit shahid avec préposition Allah. Quand nous disons Allah, veut dire mon point de témoin contre autres. Qui fait? Parce que c'est qui nous peut faire l'eau la terre là. Farista présente ça devant Nabi Karim. Nabi Karim peut get nous man amal. Quand il peut get nous namaz, nous roulons, nous zakat. Mais nous, yaoumoun Nabi aussi. Peut présenter devant Rasulullah ça. Peut présenter devant Rasulullah. Alors Nabi Karim dit mon point de témoin aux autres. Après ça, Nabi Karim dit, mon papa est un père qui après moi d'autres pour venir man mouchrik. Non. Mon umma en entier, il n'a pas pour tomber dans shirk après moi. Mais Nabi Karim dit quelque chose qui m'a fait peur, antana fasoufiha. De pour commencer une compétition en autres concernant dunya. Chacun pour envie de gagner dunya plus. L'autre là pour envie de gagner la case, l'autre là pour envie de gagner l'auto, l'autre là pour envie de gagner millions, l'autre là pour envie de gagner tel avantage dunya. De pour envie de gagner dunya pour une compétition dans dunya. Alors Nabi Karim il met en garde. Et ce qui Nabi Karim il dit, peine à doute ça qui sont là, il arrive, il réalisé. Jodi, nous peut servir, ban point digne, ban principe digne, pas pour digne, pas pour gagner d'akhirat. Très souvent, nous pouvons servir pour nous remplir nos pouces. Nous pouvons faire pour gagner dunya. Nous pouvons embêter du monde là. Nous pouvons servir non de ban grand ulama. Nous pouvons servir grand non de ban sahaba, tabi'in. Nous pouvons servir non Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais derrière ça, nous pouvons viser dunya. Allah, il dit à nous ça. Celui qui peut viser dunya, nous vous donnons ce qu'il peut envie de gagner dans la dunya. Mais seulement dans l'akhirat, il peut une punition jahannam. Mais par contre, celui qui ne fait rien, sincèrement, il fait pour gagner ce savoir. Il n'a pas envie aucune publicité. Il n'a pas envie qu'il fasse son éloge le micro. Il n'a pas envie qu'il fasse son éloge de Facebook. Il fait ça juste pour Allah et son Rasoul. Après, il oublie, il a dit. Ça, du monde là, pour gagner l'akhirat. Allah Rabbul Alamin. Donne-nous tawfiq et amal. अखलाक इंसान का एक ऐसा जुज़ है कि जिसके अंदर ये सिफत यानी खूबी पाई जाती तो समझ लीजिए कि वो कामिल इंसान है। अखलाक एक ऐसी दवा है जो दिल और दिमाग दोनों को ग़िज़ा पहुँचाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत की ज़ीनत अखलाक को करार दिया है। मॉरिशस के जैद आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामद बरकतुहुम आलिया ने मुसलमानों के हकीकी किरदार पर बात करते हुए बताया कि सद अफसोस आज जो किरदार हम पेश कर रहे हैं वो हकीकी मोमिन के किरदार से बहुत दूर है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم. Dans l'élan célébration Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous payons l'occasion, nous payons hidayat, nous payons tawfiq pour assister célébration Eid Miladun Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Aujourd'hui, plusieurs places et alhamdulillah,
ici aussi, nous faisons un récit de nos présences. Nous te demandons que Allah tabaraka wa ta'ala fait kaboul sa mahfil, lui fait kaboul nos présences et par barakat sa mahfil préserve nos imans jusqu'à nos derniers jours, garde nous le iman et je lève nous depuis la dunya, lève nous le iman. Nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala infiniment qui sa ti zindagi qui fin de nous, sa ti la vie qui fin de nous là. Nous peut passer un petit peu d'en faire éloge Allah tabaraka wa ta'ala, éloge Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en prendre nos dînes à la lumière Coran, à la lumière Hadith, à la lumière Sunnat Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à la lumière Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur akhlaq Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur comportement. Ban frère, ban sœur qui là, comment nous connaissons aujourd'hui, que le monde papeget islam d'après nos livres, d'après nos hadiths, d'après nos Coran, d'après parole Nabi Karim sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le monde aujourd'hui pèse islam d'après nos façons de vivre, d'après nos caractères, sa comportement qui nous peut projeter dans la société là. Sa caractère qui nous peut projeter dans la société, du monde peut croire, ça même l'islam, ça même din, ça même nos prophètes fin enseignent nous. Parce que quelque part, nous ne pouvons pas prendre pour nos France, les paraître, comment dire, nous-mêmes, la communauté musulmane, nous un petit peu plus grossier, nous un petit peu plus vulgaire, nous-mêmes, nos langages, les un petit peu plus mauvais, et plus beaucoup jouer, nous la bouche même, sa akhlaq, sa caractère qui ne peut projeter là, est vraiment, vraiment chagrinant. Aujourd'hui, si nous voulons pour par l'islam nous montrer ce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam finançait nous, c'est nous-mêmes musulmans, premier nous biser pratiquer, nous mettre à nous faire amal lola pour nous capables de montrer vrai l'islam qui était, vrai l'enseignement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui était, et vrai talim que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin de nous. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala fais-nous faire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam un modèle pour nous comme il fait dire laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Nous dans le bazar, nous dans le masjid, nous dans la case, n'importe côté nous lieu de travail, nous parmi nous ban collègues, nous dans le bus, nous dans le train, nous dans le métro, côté nous était, nos caractères, nous l'exemple qui sont là, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. À nous faire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, finir l'exemple pour nous, n'importe côté nous était, n'importe côté nous restait, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala faire qaboul de ce baraga wa ma alayna illa al-balang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन मक्का अल मुकर्रमा सोसाइटी की जानिब से मुसलमान लावाले सैकवा पोटली में अक़ीदत मोहब्बत के साथ मुनक़िदा सालाना जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुसलाम और दुआ से अख्तिताम को पहुँचा। ये प्रोग्राम ही पाए तकमील को पहुँच जाएगा। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء तेरी सादगी पे लाखों तेरी आजिज़ी पे लाखों हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले
या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك العفو عافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربي أني مسني الدر وأنت أرحم الراحمين الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين ببركة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين नूर वाले मुस्तफा की आमद है नूर वाले मुस्तफा की आमद है सरकार की आमद दिलदार की आमद लजपाल की आमद गमखार की आमद मनटार की आमद